Very good morning and welcome back with me, Ravi, your verbal ability and soft skill trainer. Today we will do a new session on spotting errors, correct use of grammar. Okay, so today we will be discussing about various sentences, the concept of parts of speech that we just did in the last module, all the eight parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, conjunction, preposition, interjection, okay, and all. So, how to use them correctly in a sentence, what are the rules they follow, and what are the exceptions. So, that we will come to know by this video. And at the end of this video, you will be very well able to learn and to figure out the various errors that might be there in sentence corrections whenever you go for a spotting errors and the correct usage of grammar, how to use the correct sentences and how to use these parts of speech correctly according to the rules in the current use of your sentences. So let's start. Also, this module of the second module of the first part will clear your doubts regarding the usage of various parts of speech. There are certain things that we should keep in mind. Often people mistake while using these prepositions, conjunctions, or nouns and pronouns. So there might be something which will not be able to clear. Okay, when we study according to the book. At the time, sometimes it happens that your concept is clear regarding this, but you are unable to point out the mistake. Sometimes we ourselves commit mistake in doing such things. Okay, so how to avoid the usage in which they can be used and how to spot the sentences which are wrong. So let's find it out, and I'll also, along with the exercises, I will tell you their description. Okay, and we can do it through some of the questions in our video. So let's start. Spotting errors, error spotting, find the part of the sentences that has an error. So basically, you have to point out the part of the sentence that contains error and what should be the correct uh, sentence in that place. So there will be a sentence which will be reflected on the screen, and it is divided into 4 5 parts. Okay, you have to identify that part which is incorrect. Once you identify the part which is incorrect, you have to tell me what should be the right thing in that place. Okay, so let's start with the first sentence. Okay, now we will learn through various sentences and exercises the correct use of grammar and the parts of speech, the various words which are used in the sentences, their rules, and everything. The first sentence says, the blind old man was knocked down by car upon crossing the road. So as you can see this sentence, it is divided into one, two, three, and four parts. Okay, suppose if the error is in part A, you have to point out or you will uh, identify that part. Okay, and the error also, and what should be the right thing in its place, which words or which concept should be used in the right way to make the sentence proper. So let's see. The blind old man was knocked down by the car upon crossing the road. एक अंधा आदमी, बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस कर रहा है और उसको एक गाड़ी टक्कर मार के, नॉकडाउन मतलब गिरा देना, टक्कर मार देना, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं. राइट, द मैन हैज बीन नॉक डाउन बाय द कार upon crossing the road, while he is crossing the road. So what do you think is should be the right answer? Any guesses? Okay, let's see the answer. The answer is part C contains the error. Okay, and what is the error? Replace upon by while. We never use this word upon crossing the road. It is wrong. The usage itself is not. Okay, upon crossing the road, नो वाइल क्रॉसिंग द रोड. अपॉन की जगह हमें क्या यूज करना होगा? वाइल. अपॉन यहाँ पे गलत प्लेस्ड है. ठीक है, अपॉन क्रॉसिंग द रोड कोई सेंटेंस ही नहीं है. इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस. ऑलराइट, सो वी शुड यूज द वर्ड वाइल.
रोड क्रॉस करते समय वो अंधा बूढ़ा आदमी गाड़ी से टक्कर खाके गिर गया. So that is why we should use the word while. So here part C contains the error and the right word should be while in place of upon. Let's see another example. The angry man walked hurriedly into the crowded room and shouted loud at the guest. So गुस्सा एक आदमी बहुत गुस्से में, ठीक है, क्राउडेड रूम के अंदर गया, बहुत सारे लोग भरे थे वहां पे, और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. किसके ऊपर? गेस्ट के ऊपर. हो सकता है शायद वो बहुत शोर कर रहे हो. सो ही स्टार्टेड शाउटिंग आउट लाउड एट द गेस्ट. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, और विच पार्ट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? The angry man walked hurriedly into the crowded room and shouted loud at the guest. Let's see the answer. So the answer would be in part C, you have to replace loud by the word loudly. It's an adverb. Remember in the adverb video, I have already told you when an adjective comes with ly form, it is called adverb. And adverb is a word which defines or adds something to the meaning of adjective, verb, or another adverb used in the sentence. So here सेंटेंस क्या है? एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली. गुस्से में जो आदमी था वो जल्दी से इनटू द क्राउडेड रूम में गया एंड शाउटेड. और उसने क्या करना शुरू किया? शाउट करना शुरू किया. कैसे? लाउडली. लाउडली शुड बी द राइट आंसर. Again, because here it is shouted. Shouted is an adjective. It is telling something about the angry man, his action. Okay. So anything which defines an adjective or adds something to the meaning of adjective is known as adverb. So the loudly should be the right word, which should be used in place of loud. Loud की जगह हमें क्या यूज करना है? Loudly यूज करना है, तब सेंटेंस प्रॉपर होगा और इसका एक मीनिंग बनेगा. ठीक है. तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज में, और इसी के साथ साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे. ये एक्सरसाइज खासतौर से मैंने इसलिए भी रखा है कि अभी हमने जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का मॉड्यूल फिनिश किया है, तो उसके बाद मुझे लगा कि एक ग्रामेटिकल एरर का भी होना चाहिए ताकि हम उस नॉलेज को यहाँ अप्लाई कर सके. देखें कि हम कितनी जुडिशियली उसको यूज कर पाते हैं या उसका एप्लीकेशन हम सही से कर पाते हैं कि नहीं. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. I go to the bed 8 every night. मैं जाता हूं बेड पे at 8, रात को 8 बजे, every night, हर रात. यानी मैं रात को 8 बजे अपने बेड पर चला जाता हूं. दिस इज द सेंटेंस. तो आपको क्या लगता है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में, या अगर कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो डी शुड बी द राइट ऑप्शन. लेट्स सी. रिमूव द means I go to the bed. Part A contains error. यहां द नहीं होगा बिकॉज हम आर्टिकल द बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर चीजों के लिए. सो बेड के साथ द यूज नहीं होगा. आई गो टू बेड एट नाइट. इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज योर बेड. यू गो टू अ पर्टिकुलर बेड, यू गो टू अ बेड, ओके, योर ओन बेड every night at 8. So we should not use the article the here. Okay, it is unnecessary, redundant. It's not necessary. Okay, it is not specifying a particular bed. Of course you can go to any bed. आप कहीं भी सो सकते हो. It's not specifying that you go to a particular bed, right? So I go to bed at 8 every night. मैं रात को 8 बजे अपने बेड पे चला जाता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. I shall write to you when I shall reach Bangalore. मैं आपको पत्र लिखूंगा या इन्फॉर्म करूंगा जब मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा. तो इस सेंटेंस को भी अभी अगर आप देखें, ए बी सी एंड डी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, राइट. और इसमें से आपको क्या लगता है कि विच शुड बी द राइट आंसर? देखिए, आई शैल राइट टू यू, मैं लिखूंगा आपके पास, व्हेन आई शैल रीच बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर पहुंचूंगा. राइट. लेट्स सी द करेक्ट आंसर.
remove shall. Okay, here यहां पे कौन सा वाला शैल, ये वाला शैल पार्ट सी में जो है, आई शैल राइट टू यू, दैट इज ओके, ये तो यहां शैल लगेगा ही लगेगा। वेन आई रीच बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर पहुंचूंगा, यहां पे ये एडिशनल शैल लगा हुआ है, इसकी कोई फ्रेंड्स जरूरत नहीं है। सो वी कैन रिमूव शैल, ओके, एंड द सेंटेंस विल गिव द क्लियर एंड सेम मीनिंग what it is delivering. Okay, so I shall write to you when I reach Bangalore. मैं लिखूंगा आपके पास जब मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा। when I shall reach Bangalore नहीं होगा, when I reach Bangalore. Okay, I shall जब मैं पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। so when I reach Bangalore, जब मैं पहुंचूंगा तब मैं आपके पास इन्फॉर्म करूंगा या आपको लिख के बता दूंगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, एंड वाई यू शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स, वेयर इट शुड बी यूज, हाउ इट शुड बी यूज, ये धीरे धीरे और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उनके साथ क्लियर होता चला जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आई वंडर व्हाट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। आई वंडर व्हाट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। मैं थोड़ा सा हैरान हूं ये सोचकर कि उसने मेरे बुक के साथ क्या किया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा हैरान हूं। आई वंडर व्हाट ही हैज डन, क्या किया होगा उसने उस किताब के साथ जो मैंने उसको दिया है। ओके, सो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस डू यू थिंक द एरर लाइज? ए, बी, सी और डी? लेट्स सी द आंसर। yes, it is in part C. Okay, lent फॉर्म जो चलता है लेंट का, इट्स अ वर्ब, लेंट। ओके, सो विच आई लेंट हिम, जो आपने उसको दिया था, ये फर्स्ट फॉर्म यहां पे नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां नहीं लगेगा क्योंकि बात पास्ट टेंस की हो रही है। तो आपने जो किताब ऑलरेडी उसको दे दिया है, उसने उसके साथ क्या किया होगा ये वंडर कर रहे हैं आप, राइट। सो द एक्शन हैज ऑलरेडी बीन डन इन द पास्ट, right? So we will use the second form of the verb which I lend him. Lent, sorry, okay? Lent should be used in place of lend because ये V1 है, V1 यहाँ use नहीं करेंगे, we are talking about the past, okay? That is why we will use the second form, lent. Next देख लेते हैं। There was a place near the resort that was known to be a place haunted by a multitude of ghosts. एक कोई जगह थी रिजॉर्ट के पास, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जगह है कोई रिजॉर्ट के पास, जो इस वजह से जाना जाता था कि वहां पे एक से ज्यादा भूत रहते हैं। ठीक है, दे आर, इट्स हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन कैप्चर ऑफ or spirit or some supernatural power, right? So there was a place near the resort, resort के नजदीक एक ऐसी जगह है जो काफी भूतों, ऐसा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां काफी भूत रहते हैं, so वो उस चीज के लिए फेमस है। And now what should be the error in the sentence? There was a place near the resort that was known to be a place haunted by a multitude, multitude मतलब more than one, बहुत सारे, multitude of ghosts. Let's see the answer. Replace there by there. Yes, ये वाला अगर हम पार्ट ए देखें तो पार्ट ए में जो देयर ये यूज किया गया है इसका मतलब होता है उनका, मगर यहां पे वो सेंटेंस नहीं बनेगा अगर हम ये वाला देयर यूज करेंगे। देयर मतलब उनका, उनका कोई प्लेस था नहीं, देयर वॉज ए प्लेस। हम ये बता रहे हैं कि वहां एक जगह है रिजॉर्ट के पास जहां पे बहुत सारे भूत रहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं या उस चीज के लिए वो फेमस है। तो हम ये वाला देयर नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज THERE, देयर, दैट इज द थिंग, राइट। सो दैट इज the A part which is containing the errors. So here friends, you must have noticed that how small words are creating errors in the sentence. We hardly pay attention when we speak to people in our common life, day to day life. So we need to take care of these things even while writing also, or when we are speaking to someone. Let's see the next one. Catherine did not want something to do with Richard
after the Ponzi scheme he pulled. Okay, कैथरीन डिड नॉट वांट समथिंग टू डू विथ रिचर्ड. क्या मतलब हुआ उसका? कैथरीन जो है वो रिचर्ड के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहती या कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कोई लेना देना नहीं रखना चाहती आफ्टर द पॉन्जी स्कीम. पॉन्जी स्कीम मींस अ फ्रॉड स्कीम जो उसने लॉन्च किया. कैथरीन ने पैसा लगाया होगा, उसका पैसा डूब गया. अब वो कोई भी बिजनेस फ्यूचर में किसके साथ? रिचर्ड के साथ नहीं करना चाहती ड्यू टू दिस. राइट? सो what should be the error in this sentence? Let's see the error part. Yes, part B contains the error. So instead of using something, we should use anything. मतलब इसका क्या हुआ कि कैथरीन कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहती है. ऐसा नहीं कि कुछ बिजनेस नहीं करना चाहिए. समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी. मतलब वो कोई भी बिजनेस रिचर्ड के साथ नहीं करना चाहती क्योंकि एक बार वो धोखा खा चुकी है. सो समथिंग की जगह हमें क्या यूज करना होगा? एनीथिंग. राइट? सो पार्ट बी कंटेन्स द रियल एरर. Let's see the next sentence. The results of examination were not announced for much time after the predetermined hour passed. ओके, सो सेंटेंस क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा. द रिजल्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स थे, वर नॉट अनाउंस्ड, अनाउंस नहीं हुए थे, फॉर मच. ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है. फॉर मच, आगे देखते हैं. टाइम आफ्टर, फॉर मच टाइम आफ्टर प्री डिटरमाइंड आर, जितना दिन का उन्होंने समय दिया था उस समय के गुजरने के बाद भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया. जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन आपका खत्म हुआ और अथॉरिटी ने बोला कि 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, मगर वो 1-2 महीने निकल गए, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, प्री डिटरमाइंड आवर पास्ट. तो जो पहले से डिटरमाइंड आवर था कि इतने दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, वो होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया. ओके, सो दिस इज द सेंटेंस. नाउ लेट्स सी द एरर इन दिस पार्ट. The results for examination, A part, I think it is clear. It does not have any error in that. Were not announced for much. Okay, much time कभी भी use नहीं होता है. Okay, so I think it should be in part B. Let's see the answer. Yes. See, replace much with some. Sometime after the predetermined hour pass. So we will not use much मतलब बहुत सारा. ठीक है, तो बहुत सारा टाइम पास नहीं होगा. हम ये कहेंगे कि जो दिया हुआ समय था उसके गुजरने के कुछ समय बाद भी, ठीक है, सम मतलब कुछ, गुजरने के कुछ समय बाद भी उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मच वी विल यूज सम. So this is how these are small things which we need to pay attention and take care of while writing sentences. All right, let's see the next example. Only reason Mario decided to partake मतलब participate करना या किसी चीज में हिस्सेदारी लेना. ठीक है, to have a share or to participate in something. To partake in mass मतलब भीड़ में या एक साथ. ठीक है, was to stop her mother for complaining constantly. और no error. सो सेंटेंस कह रहा है कि एक रीजन जो मारियो ने डिसाइड किया मास में पार्टिसिपेट करने का, वो ये था कि उसकी मां बार बार कंप्लेन कर रही थी कि तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते या शेयर क्यों नहीं करते किसी चीज में, शेयर भागीदारी हिस्सेदारी क्यों नहीं लेते. ये बार बार कंप्लेन कर रही थी वो, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से मारियो ने क्या किया? पार्टेक किया किसमें? मास में. सो ओनली रीजन, आई थिंक it should be in part A of the sentence because a reason नहीं होना चाहिए. रीजन यहां पे स्पेसिफिक बताया जा रहा है आपको. ठीक है, द होना चाहिए ए की जगह. आई थिंक इट इज इन पार्ट ए दैट instead of A we should use the only reason Mario decided. Let's see the answer if I get it right. Yes, replace A with the. Why? Because it is telling you something specific. There is a specific reason why Mario decided to partake in mass, and that was that her mother was complaining constantly. So in order to avoid that thing, he participated in or he partake in the mass. So specific reason है, that is why A की जगह हम क्या use करेंगे? The use करेंगे. All right.
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. Much people decided, much people decide to fast on certain days of the year, but there are a few who can go through with it. बहुत सारे लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि साल में कुछ दिन हम लोग फास्ट रखेंगे, उपवास रखेंगे. बहुत उनमें से, मगर उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इसको रख पाते हैं या कर पाते हैं. सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है. तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस का एरर किस पार्ट में. अगर पार्ट ए हम देखें, मच पीपल डिसाइड, मच पीपल नहीं होता है कभी भी. मेरे ख्याल से पार्ट ए में एरर है. सर्टेन डेज ऑफ द ईयर, ठीक है, बट देर आर फ्यू, बट देर आर वेरी फ्यू हु कैन गो थ्रू इट. ठीक है, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम लोग हैं, लगभग ना के बराबर है, जो इस चीज को फॉलो कर पाते हैं. लेट्स सी द आंसर. यस, एज आई टोल्ड यू, रिप्लेस मच विथ मेनी. मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है. हियर पीपल आर काउंटेबल. Many people, right? So many people decide to fast on certain days of the year, but there are few who can go through it. तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि साल में कुछ दिन उपवास रखेंगे, बट उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उसको फुलफिल कर पाते हैं, जो उसको कर पाते हैं, राइट? सो आई थिंक वी शुड use many in place of people, and we should not use much. Much people is a wrong statement. So 10 sentences, 10 sentences और हम देखते हैं. All right. Number 11 कह रहा है, another change that I noticed in her is that she avoids to speak to me. No error. सेंटेंस क्या कह रहा है? Another change that I noticed in her is that. एक दूसरा चेंज जो मैंने उसके अंदर नोटिस किया वो ये कि वो मुझसे बात नहीं करती, मुझे अवॉइड करती है. अब सेंटेंस के किस पार्ट में ये एरर लाई करता है? लेट्स सी. So replace speak to with speaking with. Always see the right use of preposition. Here the right use of preposition has been shown. यहाँ पे to speak to नहीं होगा. Avoids to speak to is a wrong use of preposition. Speaking के साथ हमेशा with आता है. So in the part C it should be avoids speaking with me. ओके, स्पीकिंग के साथ हमेशा विथ आता है, और स्पीक नहीं होगा, स्पीकिंग होगा. ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा. स्पीकिंग विथ मी. ओके, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सो करेक्ट प्रिपोजिशन अगर हम करेक्ट जगह यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंस का सही मतलब बनता है. लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल. There is a renewed sense of urgency in completing the project. क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? देयर इज रिन्यूड सेंस. रिन्यूड सेंस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट समथिंग आफ्टर अ ब्रीफ पॉज. किसी चीज को दोबारा शुरू करना छोटे से अंतराल के बाद, विथ ग्रेट विगर, ज्यादा जोश के साथ, और अच्छे से, और जील के साथ, और एंथुजियास्ट के साथ, राइट? सो देयर इज अ रिन्यूड सेंस. नाउ द पीपल आर वर्किंग इन मच vigorous way than before, of urgency completing the project, in completing the project, in making it, taking it on a priority basis, and completing the project. So they are working with more vigorous way. ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा जोश के साथ लोग काम कर रहे हैं पहले के मुकाबले, एंड टेकिंग इट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, अर्जेंसी बेसिस पे लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं. यू कैन सी द पीपल हियर, दोज हु आर वर्किंग. Now, in this sentence, there is no error. This sentence is completely errorless, correct. Okay, so we don't need to modify or change any part of the sentence. There is a renewed sense, बिल्कुल सही है, of urgency in completing the project. So the sentence gives a complete meaning. No error is there, friends. Let's see another example. Each boy was given a toy as a parting gift which made them happy. सभी बच्चों को, ईच बॉय मतलब प्रत्येक बच्चे को दिया गया क्या? टॉय, एक खिलौना, जब वो जा रहे थे. ठीक है, हो सकता है स्कूल से जा रहे हो या किसी पार्टी फंक्शन से जा रहे हो. ठीक है, तो एज अ गिफ्ट उनको दिया गया जाते समय, विच मेड देम हैप्पी, जिससे वो खुश हो गए. नाउ व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? एनीबडी? क्या आप लोग बता सकते हैं क्या एरर है इसमें? All right. So there is no error in the sentence. This sentence is completely errorless. Okay.
इट्स एरर फ्री, कंप्लीटली ओके, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ईच बॉय, हर बच्चे को दिया गया क्या, अ टॉय, एक खिलौना, एज अ पार्टिंग गिफ्ट। पार्टिंग गिफ्ट में जाते समय जो गिफ्ट देते हैं, ठीक है, विच मेड देम हैप्पी, जिसने उनको खुश कर दिया। सो देर इज नो एरर इन द सेंटेंस एंड इट गिव्स एब्सोल्युटली परफेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। नाउ इन दिस सेंटेंस अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें, पार्ट वाइज देखिए, इस इसका एक तरीका कैसे होता है, हम ईच एंड एवरी पार्ट, हर पार्ट को करेक्टली और केयरफुली एनालाइज करते हैं कि क्या ये पार्ट सही है। अगर हम पहला सेंटेंस देखें, पहला पार्ट, पार्ट ए, वन ऑफ द स्टेट, वन ऑफ द स्टेट कभी नहीं होता है, वन ऑफ द स्टेट्स होता है। बहुत सारे स्टेट्स में कोई एक, ठीक है, तो जब हम बहुत सारे स्टेट्स बोलते हैं तो वहां पे एस लगता है। सो देयर इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ इज रॉन्ग। सो स्टेट को हम रिप्लेस करेंगे किस चीज से, स्टेट्स के साथ। वन ऑफ द स्टेट्स इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट, बहुत सारे स्टेट्स में से एक वो स्टेट था जिसमें बहुत ज्यादा ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ गया था। लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है। सो as you can see the solution, we should replace state by states in order to get a clear and complete meaning, right? Let's see the next one. The stock was divided among two brothers. No error, right? What should be the error in the sentence? Let's break it and take it part wise. The stock was, ठीक है, स्टॉक मतलब क्या हुआ, जो हिस्सा था या कुछ अगर सामान पड़ा हुआ है, किसी चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो डिवाइडेड अमंग, डिवाइड किया गया, ठीक है, किसके बीच में, टू ब्रदर्स। अब देखिए, जब पार्ट सी में टू ब्रदर्स कह रहा है, दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज हम डिवाइड करते हैं तो वहां हम अमंग नहीं, बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल। सपोज इफ यू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन अ क्लास, so you are distributing it among the students of the class, right? वहां पे दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, 10 20 40 50 हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे हम अमंग का यूज करते हैं। और जब दो लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। सो आई थिंक बी इज द wrong part, and instead of using among we should use between. So we should remove among with between. There was, the stock was divided between the two brothers. Okay, this will make a complete sense. Now the next question, Mr. Pratap being a good teacher, Mrs. Pratap being a good teacher, she has been selected for the national award. मिसेस प्रताप एक अच्छी टीचर हैं और शायद उस इसलिए उनको नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। ओके, नेशनल अवार्ड देने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। अब इस पार्ट में अगर हम देखें, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, she has been selected for the national award. What should be the error in the sentence? Okay, now here sentence का जो पार्ट बी है, वहां पे अगर हम देखें, शी हैज बीन सिलेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी हम मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, उनके बाद में हम बात कर चुके हैं, 2 बार बता चुके हैं, मिसेस प्रताप कौन, जो एक अच्छी टीचर है, उनको सिलेक्ट किया गया, हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है, वो सिलेक्ट हुई है नेशनल अवार्ड को, नेशनल अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे शी जो है वो अननेसेसरी यूज किया गया। अगर हम शी को रिमूव कर दें, then it will give you a good and complete meaning, because she is superfluous. Superfluous मतलब ऐसी जगह यूज करना जहां उसकी कोई जरूरत नहीं है, अतिरिक्त यूज करना, ज्यादातर यूज करना, उसको एक बार से ज्यादा यूज करना या बार बार यूज करना, अननेसेसरी यूज करना को हम सुपरफ्लुअस बोलते हैं, राइट? नाउ अगर हम शी को रिमूव करें तो एक कंप्लीट सेंस बन जाएगा, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर हैज बीन सिलेक्टेड। मिसेस प्रताप अच्छी टीचर हैं, इस वजह से उनको सेलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए। तो we should remove C from part B of the sentence to give it a clear meaning. Let's see the next one. She is confident to win the gold medal this time.
शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम. वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो गोल्ड मेडल जीत लेगी. मे बी शी इज अ एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन, so she's thinking like that. Now let's see what is the error. She is confident to win the gold medal this time. वो कॉन्फिडेंट है गोल्ड मेडल जीतने के लिए इस बार. Now, replace to win with of winning. Yes. Part B अगर हम देखें फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट. अगर क्वेश्चन आता है, शी इज कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है किस चीज के बारे में, किस चीज के लिए, ऑफ वॉट. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट, ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल. सो यहां जो प्रपोजिशन टू विन है ये गलत इस्तेमाल हुआ है और इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना है, ऑफ विनिंग. शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग गोल्ड मेडल दिस टाइम. राइट. Let's see the another one. Americans are accustomed to drinking coffee with their meals. Okay, Americans जो हैं उनको आदत है, accustomed मतलब they are habitual to something, they are accustomed to it, right? Of drinking coffee. किस चीज की आदत है, कॉफी ड्रिंक करने की while having their meals, जब वो खाना खाते हैं. अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें, Americans are accustomed to drinking coffee. Okay, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ लग रहा है. अमेरिकन आर accustomed to drinking coffee with their meals. Let's see the right answer. There is no error in the sentence. Okay, I was just trying to confuse you out, but when you carefully observe the sentence, Americans are accustomed to drinking coffee with their meals. बिल्कुल सही यूज है हर वर्ड का, कहीं कोई गलती नहीं हुई है. अमेरिकन्स को आदत है अपने खाने के साथ कॉफी पीने की. ठीक है, तो सेंटेंस का जो प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, वो सब बहुत ही अच्छे से यूज किए गए इसमें. सो देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट. राइट. तो आई होप कि यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. नाउ इट सेज 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड. 2 लाख लोग 2 लाख लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया जो परेड ग्राउंड में हो रही थी या चल रही थी. Now, what could be the error? 2 lakhs of people attended the meeting held in parade ground. और no error is there. आपको क्या लगता है क्या एरर हो सकता है इसमें? आइए चलिए देखते हैं एरर इसका. So it says replace held in parade ground with held in the parade ground. Yes, held in the parade ground. We are talking about a specific ground. Remember, parade ground is not any ordinary ground or general ground where you can go and do something. It is a parade ground. वहां पे parade होती है, soldiers march करते हैं. ठीक है. So we are talking about a specific place. So we will use article the here. So the C part of the sentence should be like held in the parade ground. Okay, 2 lakhs of people attended the meeting held in the parade ground. तो ये होगा correct structure sentence का. Okay. And the last sentence, let's take the last one. My desire to meet the president without prior appointment. मेरी ये इच्छा है कि मैं प्रेसिडेंट से मिलूं बिना किसी अपॉइंटमेंट के. राइट. अब ये सेंटेंस देखते हैं. माई डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट. थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, साउंड सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि कुछ मिसिंग है. लेट्स सी. माई डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट, ये पार्ट ए में कुछ मिसिंग है. आई थिंक इट्स हेल्पिंग वर्ब. माई डिजायर इज टू मीट द प्रेसिडेंट होना चाहिए. यस, यस, राइट. रिप्लेस माई डिजायर टू विथ माई डिजायर इज टू. ये होना चाहिए. माई डिजायर इज टू मीट द प्रेसिडेंट. मेरी ये इच्छा है कि मैं प्रेसिडेंट से मिलूं बिना किसी अपॉइंटमेंट के. सो माई डिजायर इज टू होना चाहिए इंस्टेड ऑफ माई डिजायर टू. माई डिजायर इज टू मीन्स गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस. हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसमें. राइट. और तब ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म बनेगा. सो फ्रेंड्स, we come to the end of the session. Okay, and I hope that this video was fruitful to you. You would have cleared all your concept of parts of speech and the various usages that were told in this video. And after this, you will be able to very well do your exercises, communicate with people error free. Okay,
and this will help you a lot in your competitive examinations also. So stay tuned for such exciting and interesting videos. I'll be back with another interesting video. Till then, stay tuned, take care, and goodbye. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for watching the video. Thank you.